बर्लिन का नाम बर्लिन क्यों है ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। इस फिल्म में बहुत कुछ होता है बर्लिन के नाम पे। देयर इज अ रीजन दैट हमने उसको ट्रेलर में भी नहीं अनाउंस किया, डिस्क्लोज किया है। Unwitting and wittingly happens with the concept of Berlin. Said everything without really seeing anything. तो आपको डाउट था कि जो बोसी ऐसा नहीं कर पाएंगे? मुझे खुद नहीं पता था कि what is my profession in the film जब तक वो शूट करते करते मुझे समझ में आया कि अच्छा मैं ये प्ले कर रही हूँ। So it's a very mysterious character. It was pretty mysterious for me too while I was playing it. I dislike wasting money. Spend money as much as you want to, but don't waste it. When I started, I have picture perfect memories of days where actors को वो चीजें नहीं मिल रही थी जो शायद किसी और एक्टर के ऑनट्राज को मिल रही थी। राहुल बोस ने कहा कि उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए, तो ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। एज अ प्रोड्यूसर आई एम सेइंग। अनुप्रिया गोयनका ने कहा कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, यहाँ पे आउटडोर बड़ा एक तामझाम का शूट है। डेफिनेटली Makes sense. Totally makes sense, but he is one of the very, very, very few artists who would be doing this, and it's amazing. And I believe I've done it my entire career. Honey, I know, I believe him because I know him as a human being. मुझे पता है कि बोसी ये कर रहे होंगे। Hi, I'm Rahul Bose. Hi, मैं हूँ अपार शक्ति खुराना। Hi, I'm Anupriya Goenka And you're watching us on Bollywood Hungama. Bollywood Hungama. On Bollywood Hungama. Please like, share and subscribe. यार बर्लिन का नाम बर्लिन क्यों है ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। देयर इज अ रीजन दैट हमने उसको ट्रेलर में भी नहीं अनाउंस किया, डिस्क्लोज किया है। एंड इट्स समथिंग वेरी वेरी रेलेवेंट, वेरी लॉजिकल एंड बहुत खूबसूरती से अतुल सबरवाल ने इसको लिखा है और डायरेक्ट किया है। एंड वी हैव ट्राइड टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड कि हम जो उन्होंने लिखा है उसको जस्टिस कर पाए। First, I would like to say that the question is written so well. I wonder who has written this question. It's a wonderful question. दूसरी बात, बर्लिन टाइटल विदाउट गिविंग टू मच अवे, इस फिल्म में बहुत कुछ होता है बर्लिन के नाम पे। बहुत इवेंट्स का मिलाप, इंटरसेक्शन Happens. unwitting and wittingly happens with the concept of Berlin. तो जब आप फिल्म देखोगे आपको फिर ज्ञान होगा कि बर्लिन के बिना ये फिल्म होती नहीं, ये प्लॉट होता नहीं। जी। Very fitting answer. You've said everything without really seeing anything. तो आपको डाउट था कि जो बोसी ऐसा नहीं कर पाएंगे? Still manages to surprise once in a while. नहीं यार, वहाँ सेट पे बहुत ज्यादा सिंपल एनर्जी रहती थी। इट्स नॉट अ सेट जहाँ पर आप इतना हुआ ही कर सको, बिकॉज इट वाज अ फिल्म एंड अ रोल एंड अ वर्ल्ड व्हिच रिक्वायर्स सर्टेन काइंड ऑफ सटल बिहेवियर एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम समय नहीं होता था यार। आई वुडंट से दैट आई वाज इन माई सेल्फ। जब कभी मैं और बोसी या अनु बैठ के वैनिटी में लंच करते थे या कभी सेट से बाहर निकलते थे तो जरूर डेफिनेटली ऐसी बातें होती थी। देखो सोनल, सेट पे एक माहौल बनता है किसी भी सेट पे, और वो माहौल बनता है उस फिल्म के स्क्रिप्ट का जो वातावरण है। आई नो दिस वर्ड इज यूज्ड वेरी फनीली नाउडेज, आई नो, बट ये जो एनवायरनमेंट, तो पीपी, आई कॉल हिम पीपी, पंजाबी पुष्किन, बिकॉज ही इज पुष्किन इन द फिल्म एंड ही इज पंजाबी, बट नॉर्मली ही विल बी लाइक, बाजी कैसे हो? अरे मैं तेनु 2 मिनट विच कॉल कर दे। हाँ नहीं सर, आई लव यू सर, आई लव यू नाउ, इट वाज फैंटास्टिक, क्या बात है, नहीं कमाल का था, मैं आपको, देन ही कांट पुट द फोन एंड बिकम पुष्किन। He has to get into the zone before that, so I think the phone is put on silent at least 30 seconds before the shot, 32 seconds before the shot. And then he has to calm down because Pushkin is very, very different from Apar. Pushkin is well brought up. Thank you so much. यही प्यार चाहिए था मुझे अपने को एक्टर्स से, इसीलिए मुंबई आया था। और सर इतना सच नहीं बोलना था खुरानों की। चलो कोई बात।
she has great taste in men. Yes, absolutely. Why don't I let Rahul answer all my questions, whatever they might be? They make Because sense. Any of his, You I know. do have great taste in men. They're all That's what I'm saying. traumatic. They're all toxic, traumatic human beings. My makeup artist and my friend Komal would second that thought very well. Komal? Now, if you want to draw a conclusion about Rahul through that, then maybe. Oh God. Not my dear. But then, anyways, I think I don't know what to say about my character. It's a very interesting part. I think a lot revolves around her. Yeah. In terms I was of about to say that कि अगर मैं इनके behalf पे कह सकूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन्हीं के पास हैं. हाँ, of course, you know, you really can't take this to otherwise story forward. हाँ, so उस पे काफी कुछ है and it's interesting that I don't think मतलब मैंने अभी लास्ट इंटरव्यू में कहा था मुझे खुद नहीं पता था कि what is my profession in the film जब तक वो शूट करते करते मुझे समझ में आया कि अच्छा मैं ये प्ले कर रही हूँ. So it's a very mysterious character. It was pretty mysterious for me too while I was playing it. And without saying much, इन्होंने बहुत मतलब फिल्म ना इतनी verbose नहीं है, you know, and especially her character बिना कुछ कहे इतना impact छोड़ जाना is very difficult. Why doesn't he let you answer? Why is he वो चुप हो interrupting गई you? थी उसके बाद सर. उन्होंने Who's मुझे space दे दी. talking? सिर्फ फुट इन द माउथ आपके साथ कम बार होता होगा. It is you that सर ये let फुट me इन द answer. माउथ आपके साथ बहुत कम दफा होता होगा. वो से am I right? नहीं, that is also by choice. When Rahul Bose gives you the privilege Option, yeah. of not having a retort to what Yeah. you've just said and let you feel witty. क्या बात है. So That's next something that question. he's granting Such you. wonderful question. Next question. I would like to say something. here. Okay. So I think, see, personally, I feel that the entourage cost is a huge cost that the production has to bear, and it probably at times takes away from, putting in the monies where it's really, really required in the film. It really depends upon what kind of budgets you really have. I would love there to be a space, though I love my team, and it does make a lot of difference, especially in a place like India and the way we shoot. I don't know, I'm not shot abroad, so I don't know whether, for me, for us actors here, our entourage becomes our home, it becomes our safe space, it becomes people, they help us, they enable us to do the job better. I don't know whether if it's also a function of having a very chaotic workspace. As in India, we have decisions which are made last minute, things keep changing on set, there's not so much of pre-prod, there is more chaos. So I also sometimes feel that it's required in India with the way we are making films here and content here. Having said that, if there was a space where good makeup artists were running the company and everybody had designated artists from the production side and not really personal entourage as much as we have today, I don't think that's a bad idea, but then there has to be a uniformity to it. Yeah, of course. What I don't like and I don't subscribe to is the fact that one person will have it and the other wouldn't. And it's very, I can understand that there are superlative stars and superstars and all that, but then there is a huge gap in that. And then there has to be an industry decision taken towards that effect, and a uniformity that has to come in place, and everybody has to be on the same table, and then good, talented entourages or makeup artists or whosoever, are supposed to be put on the job, wherein the actors also then feel comfortable to hand over the ropes to them. Yeah. So, can I say something? Okay. Two things. Number one, ये जो आपका सवाल है, ये इस फिल्म और इस स्पेस के एक्टर्स के लिए वाजिब नहीं है. What you're saying, वो जो entourage cost का stress है, I don't think so. We belong to that space of actors without number one. Number two, but जो आपका ये सवाल है बहुत important है, बहुत जायज़ है, क्योंकि I also feel कि ये कंट्रोल होना चाहिए. उसका रीज़न ये है कि when I started, I have picture perfect memories of days where actors को वो चीज़ें नहीं मिल रही थी जो शायद किसी और एक्टर के entourage को मिल रही थी.
वो पेमेंट, There's a वो गाड़ी, वो होटल का कमरा, वो टिकट, वो बहुत सारी चीजें. आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट टैलेंटेड और नॉट रिक्वायर्ड. वो अपने तरफ के कुछ क्रिएटिव सेंसिबिलिटीज के साथ आते होंगे, which is also important. But I would like to believe that after the technicians and the director and the writer and all of them, actors are important. और शायद एक्टर के बाद मेकअप आता होगा, पहले वो इंसान तो पहुंचे. और yeah, that's it. I don't know. I dislike wasting money. Spend money as much as you want to, but don't waste it. तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे ये एक्सपेंडिचर जायज़ है और कहाँ पे नहीं. फॉर एग्जाम्पल, well said. आउटडोर शूट है, पब्लिक स्पेस में है, मोर्चे का एक शूट है. गिव माई सिक्योरिटी टू अनुप्रिया. आई डोंट नीड सिक्योरिटी. आई हैव नेवर नीडेड सिक्योरिटी. आई एम नॉट फेमस इनफ एंड आई एम नॉट वल्नरेबल इनफ, सो आई डोंट नीड सिक्योरिटी. तो अगर राहुल बोस ने कहा कि उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए, तो ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है. एज अ प्रोड्यूसर आई एम सेइंग. अनुप्रिया गोयनका ने कहा कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, यहाँ पे आउटडोर बड़ा एक तामझाम का शूट है, डेफिनेटली. Makes sense. सेकंड, मुझे 3 वैनिटी वैन चाहिए. एक में मुझे वर्कआउट करना है, एक में मुझे डांस करना है, तीसरे में वी नो दिस इज अ वेस्ट. हाउ मच टाइम विल यू एक्चुअली स्पेंड डांसिंग? और सोनल, ये हो रहा है गाइस, ये हो रहा है. जो सर ने बोला, it was not to sound funny. So as a producer, and I've produced 2 films, you say, is it necessary? Must do it. If it's necessary for you to fly in a chartered plane, shoot के लिए, क्योंकि ये आखिरी दिन है इस महल पे शूट करना, उसके बाद महल टूटने वाला है, डन. तो जो जायज़ है और ना जायज़ है, this is depending on the context. Finally, what is the budget of my movie? As an actor, मैंने हमेशा कहा कि अगर इन्हें इतना सा वैनिटी वैन मिल रहा है और इन्हें इतनी सी वैनिटी वैन मिल रही है, मुझे उतना चाहिए, उससे कम नहीं. उससे ज्यादा ना हो, लेकिन उससे कम नहीं. Equality. ओके. सिमिलरली, इवन इन द मनी, अगर फिल्म का बजट है 10 रुपए और आप इन्हें 1 रुपए दे रहे हैं, इनको 1.25 रुपए दे रहे हैं, तो मुझे कहीं पे, अगर मेरा रोल कॉम्परेबल है, इनके बीच में कहीं ना कहीं आप दे दें तो ठीक है. Makes sense. ऐसा नहीं कि आप मुझे 5 रुपए दें, इम्बैलेंस द होल प्रोजेक्ट, या मुझे 25 पैसे दें. सो एवरीथिंग शुड बी डन सेंसिबली, इन रेशियो एंड इन कॉन्टेक्स्ट. देयरफॉर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हर एंटोurage विल बी लार्जर देन माइन, बिकॉज शी नीड्स इट. She needs that makeup person, she needs that security person, that's fine. And sometimes it might mean that mine will be more than his. It's not a function, it should not be a function of ego, it should be a function of what is correct, needed and affordable. उसके ज़्यादा अगर आप अपने कितने फिल्मों में, you know the kind of films I do, sometimes the film doesn't pay for my petrol bill. Yeah. I still stay in a 5-star hotel. I still have a comfortable car to drive in. Yeah. I do all that, but I pay for it. Oh, sweet. I don't say anything. I say, आप बताएं कि सबको कितना मिल रहा है. सबको दाल रोटी मिल रही है, ठीक है. अगर मुझे दाल रोटी के ऊपर पनीर चाहिए, मैं पैसे दे दूंगा. Makes sense. अगर मुझे मुमकिन, या अगर मुझे मैं समझता हूँ कि जरूरी है, I'll pay the money. Totally makes sense, but he is one of the very, very, very few artists who would be doing this, and it's amazing. And I believe. I've done it my entire career. Honey, I know. I believe him because I know him as a human being. मुझे पता है कि बोसी ये कर रहे होंगे, and it's beautiful. And बोसी. if I may add in here, like for Berlin itself, personally, I did not have my own makeup artist with this one. We had Pinaz, who is absolutely amazing. We used Pinaz. So exactly, and so Atul sir's, his directive was that this is such a period drama, and it's because he has to have a full control over the look and the feel of the film, and he doesn't want any headache. And plus, as an actor, we could trust Atul sir's sensibility. And we could trust Pinaz. And totally, and she was so good that I never felt
in terms of personal attention, in terms of proficiency, in terms of listening to the actor. Why you generally want your own team is also because you have a camaraderie with them. You're able to explain things to them, they know about you, they give you that personal attention. It's easier to talk and figure out things, you know, because you don't have to restart that process every time. With Pinash, she was all ears, though she's very thorough with what she wants to do with you. She has her creative control in her hands, but she'll also make a point of listening to you and making you feel involved. 3-4 international productions में ऐसा ही हुआ है. Sorry, we have makeup artists, 3 of them. दिल धड़कने दो पे. It was I think it's what's it called? B Blunt. Yeah. B Blunts. Everybody was there. हाँ, मेरे लिए एक बंदा था, इनके लिए सबके लिए एक अलग salon stylist या makeup person थे. लेकिन it was under one company. तो ठीक है. अगर वो culture है उस unit में, तो चलता है. अगर सबके लिए चल रहा है तो हमारे लिए भी चलेगा. But वो uniformity होनी So चाहिए. that's the most important point Anupriya made, which is we don't like to feel differentiated. Yeah. We just like to feel respected. That's all we want. And also, if I may add, it also can be a function of how important it is where. That's Like what I for said. certain places, I know it's going to be a difficult shoot for me, mentally, physically, and the looks are very important. And I would want my team to be there. I would really request the producer to say that this will enable me to act better. And also it's required for that film and that role. वो फिल्म में इजाफा करेगा, परफॉर्मेंस में इजाफा करेगा. तो वही एक्टर X फिल्म में ऐसा एंटोराज लेके आएगा और वही एक्टर Y फिल्म में ऐसा एंटोराज लेके आएगा. Correct. तो अगर ये if the flexibility is there within the actor, then I don't think there should be a between the actor and the producer, then there shouldn't be a problem. Hi, I'm Rahul Bose. Hi, मैं हूँ अपार शक्ति खुराना. Hi, I'm Anupriya Goenka And you're watching us on Bollywood Hungama. on Bollywood Hungama. On Bollywood Hungama. Please like, share, and subscribe.